लेट्स टॉक अबाउट योर डेली स्केड्यूल यार। आज इनको अर्नब मोटिवेट करके जाना है इनको। क्या प्रिपरेशन शेड्यूल था तेरा? हाउ डिड यू स्टडी? यू गिव कैट ट्वाइस, दोनों बार तूने 99% मारा। इस बार तो तेरे पास कॉल्स हैं, आई एम बॉम्बे है, आई एम इंदौर है, और भर भर की कॉल्स हैं, एग्जिट रही है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं कईयों के। तो बहुत ही बढ़िया। बेस्ट चॉइस क्या रहेगा? कहाँ जाएगा तू वैसे, ये बता पहले। So given the option, I'd prefer Mumbai because operations focused, especially undergrad in mechanical engineering, working in that, so aligns with what I want to do. So probably that. Excellent. Yeah. Superb, yeah, superb. So you gave CAT in final year of engineering, and then you got a 99%. You were not happy being a gem. You thought you to work more hard. You CAT, you got a 99.60 percentile. बहुत ही बढ़िया, great यार. Let's Yes. talk about your daily routine. But you tell them, like, if they have to daily structure their plan, being of your age, you're 21, 22, 23, क्या उम्र क्या है तेरी? Yeah, I just turned 23 through a temple You this just year. 20, 23. Brilliant, Yeah. brilliant. तो क्या preparation slide होना चाहिए? Let's go. I'd say first of all, what I did was based on like जो मेरे seniors ने उन्होंने मेरे को बताया कि that really helped me was कि एक give a base mock के like just attempt a mock बिना पढ़े कुछ भी बिना पढ़े कि it'll give you कि भाई अभी मैं कितना पानी में हूँ, कितना आता है कितना नहीं आता, and it'll tell you कि okay अभी इस part पे focus पर करना है, उस वाले पे करना है. For me personally, what I found out was कि ठीक है quants is not that bad. DILR is hit or miss, और verbal में I was little uh, it was कि भाई जरूरत है पढ़ने की, verbal पढ़ने की जरूरत है अपने को. तो that was so then which is when के I was so plus I was working alongside this, so I was in college I was also working with that part time. तो I didn't have a lot of time, तो my approach was majorly focused on के let's optimize के अभी जो part में सबसे ज्यादा marks का आ रहा है एंड हमको सबसे कम आता है उसको सबसे पहले अप्रोच करना है. तो दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई डिड के ओके स्पेशली इन वर्बल में ओके I a lot of times I do know the meanings of the actual words, but I'm not able to interpret what the passage is trying to tell me. So that is something that I did focus on. Then DILR mein it was okay. Certain types of questions I'm easily able to do. Okay, if it's a type of a bar graph or a chart or something like that, then I'm able to do that. But if it's something of a rearrangement problem or something that is causing me some issues, तो उसमें I did start focusing on that. तो what I basically found out was कि ठीक है मतलब ये तो चल रहा है जो like the only way to get better at things is to continuously practice, like that's what I think कि मतलब नहीं हो रहा है just वापस समझ नहीं आ रहा वापस करा, फिर नहीं समझ आ रहा वापस करा, until I'm at a point के ठीक है at least in each and every subject I have enough basic information about each and every subject के ठीक है at least maybe in every topic अगर एकदम next level LOD 2 level का उससे भी ऊपर level का कुछ question आ गया, I might not be able to do that. But if a basic question comes या ऐसा कोई question किसी भी topic का कि जो easily like the other people are able to solve, अगर किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा है, do not miss those questions because like वो तो सभी लोग कर ही रहे हैं ना. तो that will help you get to the 98 99 percentile, and then post 99 are gonna be those the difficult tricky questions where you have those tricks where you are able to approach those questions in a way कि okay I'm gonna save time, I'm gonna attempt these questions, and I'm gonna be amongst the few people who are actually gonna be able to do it. Brilliant, yeah, brilliant. We'll come to the mocks in a minute. बहुत बढ़िया भाई. First learning for everyone. Basic of everything should be done जो अर्नब ने किया है. कोई भी क्वेश्चन वहां पे ऐसा हो जाए कि वो इजी था और बाकी जनता ने कर लिया क्योंकि उसने वो टॉपिक किया होता, कुछ छोड़ो मत. एक बार सारा सिलेबस तो आपको आना ही चाहिए. ग्रेट यार. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सेक्शन फॉर द डे विच इज वर्बल एबिलिटी. मेरा सेक्शन है 99.31 भाई. फटे चक दिए तूने. बीइंग एन इंजीनियर मतलब ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने तुझे बोला होगा कि भाई ये अपना 99.31 मुझे दे दे तो मेरा कैट में 100% हो जाएगा. बहुत सारे इंजीनियर होते हैं आईआईटी के बिट्स पिलाने की जिनका वर्बल ठुक जाता है. And all of engineers have some issues in verbal. I also had like long back. But what went right in your direction? Are you a book reader? Did you Yeah, spend time on definitely. Eon essays or newspapers? क्या strategy बताओ. Sir, I would say that it does not matter if you're in the initial stage, at least if you're reading Aeon essays, या newspaper पढ़ रहे हो, novel पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, just start reading is something I would say. I personally like really into like novels and all, so I did actually read like since a long time. मतलब मैं पढ़ता रहा. I have a personal library 250 300 books का which I've all read. So but Nice, nice.
तो दैट डेफिनेटली हेल्प मी. बट आई पर्सनली ऑल्सो हैव फ्रेंड्स जिनका ऐसा कोई दे डिडंट हैव बैकग्राउंड इन रीडिंग और एनीथिंग लाइक दैट एंड दे हैव स्कोर्ड मेरे मेरे से बेटर भी स्कोर करे हैं डेफिनेटली. तो इट्स अ लॉट अबाउट के कैट में दी लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पैसेज इज नॉट के दैट हार्ड कि अच्छा ये वर्ड ही नहीं समझ आ रहा है, ये सेंटेंस ही नहीं समझ आ रहा. इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ऑथर और समवन लाइक द पेपर सेटर व्हाट ही और शी इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दैट क्वेश्चन एंड इंटरप्रेटिंग इट इन अ गुड मैनर, जो इनिशियली मेरे से नहीं होता था. बट देन आप मोइनैक सर का सॉल्व देखता था एंड ही इज नेक्स्ट लेवल. तो नेक्स्ट वो जादू करता है. अभी इनको दिखेगा मोइनैक आगे. तो भाई बता इनको मोइनैक, इनको भी पता नहीं कि वो एनालिसिस वगैरह क्या करता है मोइनैक का, सो दैट इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल. So post your mocks, guys. You'll get some video. You'll have live sessions. So I didn't attend the live very often. Depends on के ऑफिस है नहीं है, क्या है काम नहीं है. बट आई इंश्योर्ड कि भाई रिकॉर्डिंग तो देखना ही उसका वर्स्ट केस में. Because what he did was alongside while solving these mocks, he also tells you कि what he's thinking at that moment and how he's approaching that question. Okay, if ये कोई स्पेसिफिक लाइन लिखना है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो उसने स्पेसिफिकली ऑथर ने ये लाइन यहाँ पे क्यों डाला, कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है हमको. तो कैचिंग ऑन दोज थिंग्स एंड दैट्स कोई ऐसे इट्स नॉट अ मैथमेटिकल स्किल कि भाई प्लस सिखा दिया माइनस सिखा दिया समथिंग लाइक दैट. इट्स ओनली समथिंग यू गेट टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस and not just practicing in the right direction with the right approach and the right mentors that are there with you, who are definitely present there at CAT game. सही है यार. चलो भाई लास्ट पार्ट. तो भाई वर्बल तो इनका पढ़ पढ़ के हो जाएगा. बी वेल रेड, कीप रीडिंग व्हाटएवर यू वांट एंड अंडरस्टैंड द पेपर सेटर्स माइंडसेट. और पुराने पेपर वगैरह सॉल्व किए थोड़े बहुत, पुराने पेपर वगैरह हाँ देखे थे. सर. या तो डेफिनेट आई थिंक लास्ट 7 to 8 years के क्वेश्चन पेपर्स आई सॉल्व ऑल ऑफ देम. तो माय प्रेप वाज बिकॉज बहुत a ही बढ़िया. lot of it सादर साहब was की पेपर work देख लो. वगैरह and all. Yeah. So I was focused on more on question solving. बहुत बढ़िया. So box and previous year questions. Excellent. This is amazing.